2.85 million cubic meters of earth were required to fill the disused sand quarry at Rifle Range Road. Part 1. If each truck could carry a maximum load of 6.25 meter cube of earth per trip, how many trips were required to fill the entire quarry? Okay. Acha, this is the area 2.85 times 10 की पावर 6 हो जाएगा मिलियन. Like this. अच्छा ये समझ आ गया आपको कि ये मैंने किस तरह लिखा है? नहीं है समझ? नहीं. अच्छा 2.85 को मिलियन में लिख लो तो मिलियन में कितने जीरोस होते हैं? 6. तो ये क्या हो जाएगा 6 zeros. तो दिस इज a decimal sign. तो यहाँ इस तरह कर लेंगे 2.85 6 0 toward the left चली जाए 1 2 3 4 5 6. तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा. तो ये आपका जाएगा 1 2 3 4. तो ये आपका आ जाएगा 2 8 5 0 0 0 0 पॉइंट 0. ओके ये आपका 0 आ जाएगा यहाँ पे. पॉइंट यहाँ पे आ गया. ओके तो मिलियन में 6 zeros होते हैं तो इट डिपेंड ऑन दी पॉइंट. बट हियर वी हैव अगर इस तरह होता तो फिर तो 285 फिर 6 0 डाले थे क्योंकि 285 मिलियन इज गिवन टू यू. इफ 285 मिलियन इज गिवन टू यू तो आपने क्या करना है 285 के साथ जीरोस पुट करने हैं 6 zeros. क्यों 6 zeros यहाँ पे पुट करने क्योंकि 285 में पॉइंट कहाँ पे यहाँ पे पॉइंट आपका यहाँ पे है. ओके तो यहाँ पॉइंट 1 2 3 4 5 6 अब पॉइंट यहाँ पे आ गया तो 6 डिजिट आपने राइट साइड पे जाने. ओके इन मिलियन. बट यहाँ पे क्या था पॉइंट यहाँ पे था तो इसको 6 डिजिट राइट साइड पे ले जाओ. सो यू विल गेट 285 0 0 0 0 मीटर क्यूब. ओके एनी कंफ्यूजन क्वेश्चन यू कैन आस्क. No. अब क्या करना है उन्होंने क्या कहा है कि required to fill the disused sink sand quarry at Rifle Range Road if each truck could carry a maximum load of itna meter cube. How many trips? So this is for one trip. This is 1 meter cube. This is 6.25 meter cube per trip. तो we need to find the trip. तो अगर इसको मैं इस तरह लिखूं पर वन ट्रिप के टाइम्स मीटर क्यूब को मैं नीचे ले आऊं पर वन ट्रिप उसी तरह की जिस तरह हम नॉर्मल कन्वर्जन करते हैं. तो ये मीटर क्यूब इस मीटर क्यूब के साथ कट जाएगा. यू विल गेट 285,000 डिवाइड बाय 625. यू विल गेट द नंबर ऑफ ट्रिप्स. So इसको कर लो you will get the number of trips 285 0 0 0 0 divided by 6.25. You will get 456 1 2 3 these trips. Okay कितने trips आप उन्होंने लगाने 456 0 0 0. अच्छा क्वेश्चन की समझ आ गई आपको कि नहीं? ये क्वेश्चन ये है कि इतना लैंड या दिस इज द लैंड. ओके एंड यू विल नीड टू bring your truck to fill up this land. So in one truck one truck will carry 6.25 meter cube and this land area is 2.85 million cubic. सही है. तो सही. अच्छा द कॉस्ट ऑफ तो पार्ट ए का आंसर क्या हो जाएगा 456,000 trips. अच्छा द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ईच ट्रक लोड ऑफ
was $55. How much did it cost to fill the query? तो क्या होगा, क्या करना है? This is a price is $55 per truck, for one truck, okay? One trip. This is the cost of one trip. So क्या करना होगा? You need to find cost. 456,000 times 55. Times 55, yeah, $55 per trip हो जाएगा. यहाँ पे भी आपका ट्रिप है, यहाँ पे भी ट्रिप हो जाएगा for one trip. So ये this cancel out by this, so you will get this. इसको multiply कर लो, you will get the final answer, okay? You will get 25080000 $, okay? This much amount, okay? Part 3. Given that the site of the query has a land area of approximately 3 hectares, okay, now the site of the query had a land area of approximately 3 hectares. Find the cost to fill 1 meter square of the land. 3 hectares will be equal to 30,000 meters square. Wait, let me check it. Okay, now the site of the query had a land area. With this, we have a land area that is 3 hectares, okay? So 3 hectares will be equal to 30,000 meters square. Wait. ओके फर्स्ट से हमारे पास कॉस्ट क्या रहा था, दैट इज 25.08 मिलियन, ओके, या $2508000 ओके. नाउ द लैंड इज 30,000 मीटर स्क्वायर. इस सो यहाँ दिस मच कॉस्ट like this much cost will give you this much area, okay? Will be equal to cost of this itna area, that is equal to cost of 30,000 meter square area, okay? So 1 meter square area क्या हो जाएगा? 1 meter square area will be equal to divided by 30,000 divided by 30,000.
So you will get cost of 1 meter square. So if you do it on calculator, you will get 836 US डॉलर। अच्छा, इसको मैं दोबारा समझाता हूँ। यहाँ तक तो समझ आ गया आपको ना, पार्ट 2 तक? Oh, yes. Now you will need to convert this area into hectares of area. 3 hectares, okay, and 1 hectare area is 10,000 meters square. So 3 hectare area will be equal to 30,000 meters square. So we already find the cost in part 2, that is 25,508 million rupees, $1 million, okay. So this much cost is equal to area, that is 30,000 meters square. So 1 meter square, question is find the cost to fill 1 meter square of the land. So 1 meter square land will be equal to 2508 this much divided by 30,000. So from this you will get 836 US dollar.